तो लग गया, right? The important part that we have to remember that what is the meaning of drift speed and what is the meaning of drift velocity. So very simple idea कि we were trying to develop a model, right? हम लोग एक मॉडल बनाना चाहते थे कि why metals or metallic conductors are having very good conductivity. ठीक है sir? To explain this model, we are assuming a theory which is called the free electron theory. In the free electron theory, what we are saying that जो valence electrons of metallic atoms है, right? Some of them, or in some metals, rather all of them, वो क्या करेगा अपने parent atom से बाहर निकलेगा, ठीक है? And they will form a crowd which randomly moves around within the space of the ions or the lattice. ठीक है? इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. तो जब हम लोगों ने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है या जब हम लोगों ने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है, तो एट दैट मोमेंट व्हाट हैपेंस कि through any cross section of the conductor, the number of electrons flowing in one direction or number of flowing electrons flowing in the opposite direction exactly क्या होता है? Same होता है. So net flow of current becomes zero. So inside the metal there are free electrons. They are moving around randomly, but there is no current. क्यों? क्योंकि the overall flow of charge to any cross section is always zero. अब हमने क्या किया? अगर हमने इसी कंडक्टर को, suppose we have one such conductor, say a cylindrical conductor, and this conductor is now connected to a battery or a cell. तो ये बैटरी और सेल क्या करेगा? बैटरी या सेल का या सोर्स का फंक्शन क्या होता है कि इट विल maintain a potential difference. So what will happen? It will always keep one end to be at higher potential and the other one will be at lower potential. So due to this, what will happen कि जो electrons है, free electrons जो पहले खाली randomly move कर रहा था, now they will experience some force and they will start accelerating opposite to the direction of the field. क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज ऑलवेज एक्सेलरेट्स opposite to the field. So now what happens? These electrons, they will start drifting right against the field, and while doing so, they will also collide with the ions. क्योंकि उन लोगों का जो thermal motion था वो खत्म नहीं हो गया है. It is still there. Thermal motion is still there along with the you can say motion which is because of the electric field. Dono is there. Clear? So ultimately what we find that in the presence of an applied electric field, we find that in the presence of an applied electric field, right, the free electrons drift with an average uniform velocity, right, against the field. Right, this velocity is known as drift velocity. This velocity is known as drift velocity, and its magnitude is called drift speed. Yeah, the meaning of drift speed is basically what? It is the average velocity with which, average speed with which the electrons will seem to move when we apply an electric field. क्या actual electrons का motion drift velocity के साथ होता है? No, right? It is still quite a complicated motion. They still travel in zigzag path while colliding with the ion, but दिखने में क्या लगेगा कि as if an electron is moving from the lower potential end to the higher potential end with the uniform velocity on an average. उसी का नाम क्या है? Drift velocity. तो एक बार ड्रिफ्ट स्पीड फॉर्मूला की तो रिमेंबर इफ यू वांट टू राइट इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी माइनस ई इनटू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय टाउ. स्मॉल ई की magnitude of charge of electron, capital E is the electric field, m is the mass of electron, and tau represents the average relaxation time. माने the time between two successive collisions of the free electron with the vibrating ions. This electric field depends on how much potential difference you have applied. ठीक है? किंतु the tau depends on the nature of material. की material तैयारी होता है. Okay, is it made up of say iron or copper or what? It depends on
that. And it also depends on temperature. When we increase the temperature, relaxation time will decrease. If you decrease the temperature, relaxation time will increase. Opposite. ঠিক আছে? টাউটা কি বল বুঝলাম না। টাউ ডিপেন্ড করবে মেটেরিয়ালের উপরে, ঠিক আছে, and it will depend upon temperature, ঠিক আছে। This depends on the material of the conductor and temperature, ঠিক আছে। and এটার যে ম্যাগনিটিউড সেটাকে আমরা লিখি হচ্ছে ড্রিফট স্পিড, তার মানে শুধু যদি ভিডি লিখি তো সিম্পল ক্যাপিটাল ই বাই স্মল এম টাউ ইনটু ভি, this will be the magnitude of drift velocity, যাকে আমরা কি বলি ড্রিফট স্পিড বলি। Understood? Secondly, what we have said ki I want to calculate how much current is passing through the conductor, right? तो যেটা আমি কালকে বলছিলাম, লাস্ট ডে বলছিলাম कि देखने में लग रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ मूव करता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर एक्चुअली ऐसा होता तो स्विच ऑन करने के बाद लाइट को जलने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जो ड्रिफ्ट स्पीड होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है इट इज इन द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड, राइट। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी स्विच ऑन द सर्किट इंस्टेंटली फैन चलता है, इंस्टेंटली करंट फ्लो करता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया द इलेक्ट्रिक फील्ड सेट्स अप थ्रू द होल कंडक्टर विद द स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। इससे क्या होगा? Within every part of the conductor the electrons will start drifting. The whole conductor you can think of as what? Combination of small conductors, small elements. तो हर element में electrons drift करेगा, and that is why through every cross section there will be some flow of charge. This flow of charge will constitute a current जो throughout the conductor क्या होगा? Same होगा। यानी कंडक्टर का शेप चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे ना हो, right? The current through it will always remain uniform if you apply a constant electric field. समझ में आया? तो now what we are assuming कि let us say यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर हमने एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन डेवलप किया और कंसिडर किया। Let's say I'm taking a small cross sectional area which is same as area of the conductor, area of cross section of the conductor. কত সেটা সাপোজ আমি বললাম a, বুঝা গেল? তো we have taken a cross section of area a which is same as area of cross section of the cylindrical conductor. तो अभी जो इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस किया है, we know कि every electron on an average is moving with कितना स्पीड? vd स्पीड। तो जो इलेक्ट्रॉन इसको अभी क्रॉस किया तो in a small time dt how much will it travel? तो obviously it will travel a small distance, it will travel a small distance vd multiplied by dt, ঠিক আছে। তো যে ইলেকট্রন গুলো ক্রস সেকশনটাকে এখন ক্রস করলো within a time dt they will lie within a small cylinder जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? a है, एंड जिसका लेंथ कितना है? vd मल्टीप्लाइड बाय dt है, ठीक है। ताहले if you assume कि let's say n represents the number density of free electrons, नंबर डेंसिटी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n है तो ये जो छोटा सा स्मॉल मैंने एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट बनाया है এর ভিতরে কতগুলো ইলেকট্রন থাকবে? n multiplied by volume of this part. So that is nothing but n multiplied by a multiplied by vd into dt, তাই তো? তো যদি এতগুলো ইলেকট্রন is moving from left to right, তো how much charge is flowing from right to left? Same amount, but it will be opposite. Electron is going from left to right, the charge or current will flow from right to left, because we say that direction of current is along flow of positive charges, তাই তো? তাহলে আমরা বলি কি যদি এখানে একটা কারেন্ট থাকে I, তো automatically we can say the magnitude of charge which is E into this number of electrons was this. If you multiply with E, you will get the total magnitude of charge. That should be equal to I multiplied by dt. Yes or no? Because charge equal to current into time. So automatically we can say कि I will be equal to n e a multiplied by v. So this is the relation between current and drift speed. ঠিক আছে? তাহলে কি দেখা যাচ্ছে? Current is proportional to drift speed. যত drift speed বেশি হবে অত current বেশি হবে if I take the conductor of same value of n and same value of a. Clear? FD clear? কোনো কনফিউশন আছে? FD डन। अच्छा, ये रिलेशन को याद रखने का एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है।
कैसे याद रखोगे इसको? देखो बहुत सिंपल है। करंट क्यों फ्लो करता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस इन मेटालिक कंडक्टर्स। व्हिच काइंड ऑफ चार्जेस फ्लोइंग? इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। मान लो इलेक्ट्रॉन लोग गाड़ी में बैठ के जा रहा है। कैसा गाड़ी? किडनैपर वाला जो होता है ना, ओमनी वैन। ठीक है, तो करंट कितना होगा? करंट हो जाएगा, देखो सिंपल है, करंट इक्वल टू, इसको ऐसा लिखो, ई, लोग कहां जा रहा है? ई वैन, मतलब इलेक्ट्रॉन का वैन। क्लियर? तो करंट इक्वल टू क्या होगा? ई वैन। सिंपल है, देखो ई वी ए एन। यहाँ पे वी क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड है। मतलब তাহলে करंट इक्वल टू ई वैन, किडनैपर वाला वैन। ঠিক আছে, ফিনিশড। আচ্ছা, এখন যে নেক্সট পয়েন্টটা ছিল কি, generally what we have said, generally we see that the charges are flowing normal to the cross section of the conductor। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि मैंने सिलिंड्रिकल कंडक्टर लिया था, करंट was flowing parallel to the length, right? करंट was flowing parallel to the length of the conductor। कंडक्टर का शेप कैसा था? सिलिंड्रिकल। तो उसका क्रॉस सेक्शन के साथ, सर्कल जो क्रॉस सेक्शन है उसके साथ डायरेक्शन ऑफ करंट वाज परपेंडिकुलर। তাহলে যদি এরকম সিচুয়েশন থাকে কি, সাপোজ উই হ্যাভ আ প্লেনার এরিয়া এ and current is flowing normal to it I, then we define current density, we define current density as a vector। ঠিক আছে, যার ম্যাগনিটিউড j will be equal to I divided by a, current flowing per unit area of cross section normally, current flowing per unit area of cross section normally, normal to the cross section, সেটাকে আমরা কি বলবো? current density বলবো। ঠিক আছে, in other words we can say that I will be equal to j multiplied by a। কিন্তু যদি এরকম না হয়, suppose if it happens that with the normal to the cross section the direction of flow of current or charges makes angle theta, তো এখানে কি হবে? এখানে আমরা বলতে পারি কি, then I will be equal to কি, ওখানে ছিল j into a, which area was it? It was the area to which the current was perpendicular, it was the area to which the current was perpendicular। তাহলে এখন যদি কারেন্টের ডাইরেকশন নরমালের সাথে থিটা অ্যাঙ্গেল বানায়, তো which will be the area perpendicular to it? obviously আমরা জানি কি it will be a cos theta, জানি তো area can also be treated as a vector, right? And projection of the area vector along the flow of current will be a j cos theta, so now it will become j cos theta multiplied by I a, or we can say it will be equal to j dot a। বুঝা গেল? তাহলে যদি কারেন্ট ইজ ফ্লোইং নরমাল টু ক্রস সেকশন, কারেন্ট ডেন্সিটি উইল বি I by a, I will be simple j into a। যদি অ্যাঙ্গেল অফ the direction of normal to the area and current হচ্ছে থিটা হয়, then the current will be j cos theta into a, or j will be I by a cos theta, जो भी बोल, or we can say I will be equal to j dot। ঠিক আছে, ডিফারেন্সটা কি? we know current is a scalar but current density is a vector, scalar but current density is a vector। current unit কি হচ্ছে? ampere, current density unit কি আছে? ampere per meter square। understood? यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो नेक्स्ट डे, सॉरी लास्ट डे वी डिस्कस अप टू विच पार्ट हमने डिस्कस किया था? अप टू रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और हमने ये भी देखा था कि दो वी कॉल ओम्स लॉ एज अ लॉ, इट इज नॉट वैलिड एवरी टाइम, यस और नो? इट इज वैलिड फॉर ओमिक कंडक्टर्स लाइक मेटल्स, लाइक एलॉयज। ये सेमीकंडक्टर्स में, डायोड्स में हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, पहला बात, क्योंकि वहां पे क्या होगा? टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कम। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हमने डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज बदल दिया, डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बदल दिया, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे वैल्यू ऑफ करंट क्या जाता है? चेंज हो। क्लियर? दूसरा क्या है कि सेकंड पार्ट इज कि इट इज फाउंड कि द रिलेशन बिटवीन आई एंड वी इज नॉट यूनिक, राइट? इट इज नॉट यूनिक। ठीक है, तीसरा क्या है? हमने देखा था कि इफ वी चेंज द टेम्परेचर देन ओम्स लॉ विल नॉट बी वैलिड, क्योंकि ओम्स लॉ का जो बेसिक कंसेप्ट था वो क्या था कि इट शुड बी एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, मतलब टेम्परेचर, राइट, एंड स्टेट ऑफ द कंडक्टर दैट शुड रिमेन फिक्स, वो चेंज नहीं होना चाहिए। और हमने क्या देखा था कि वेरी हाई वोल्टेजेस पे या वेरी हाई करंट्स के लिए भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। क्यों? बिकॉज इफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज टू लार्ज, इट मे कॉज द इलेक्ट्रॉन्स टू बी
tracked out to be, you can say, rupture the bonds and pull out the electrons from the bonded, or you can say ions also. Inner ions से भी हम लोग इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो नंबर डेंसिटी n है वो चेंज हो जाएगा, और अगर नंबर डेंसिटी n चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, and once the resistance changes, Ohm's law is not valid, क्योंकि Ohm's law considers that resistance should be fixed. Yeah. So that was the point, and you can just recapitulate and we can say कि जब हम लोग Ohm's law लिखते हैं तो Ohm's law का mathematical form क्या था? Remember, mathematical form was V equals to I multiplied by R, where V is the potential difference across the conductor, right? Potential difference across the conductor, and I is the current through the conductor, and R represents resistance of the conductor, resistance of the given conductor at the given temperature. क्योंकि हमें पता है कि जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज कर जाए, ঠিক আছে? তাহলে যখন আমরা প্লট করব, when we plot a graph where we are plotting, say, current on the x-axis, I on the x-axis, and if we plot potential difference V on the y-axis, तो क्योंकि ये V equal to IR एक linear equation है, yes or no? If V is Y and I is X, it is like Y equal to M into X, which is the equation of straight line. So what we will get? We will get a straight line which will be passing through the origin. ठीक है? We will get a straight line passing through the origin. Remember कि Ohm's law का ग्राफ हमेशा origin से ही पास करना चाहिए. And if you calculate the slope of the line माने कि if the line say makes angle theta with the direction of the x-axis, then the slope of the line, which is equal to tan of theta, will be equal to R. When if we plot V on y-axis and current on x-axis. समझ में आया? कैसे हुआ? समझ में आ रहा है कैसे हुआ? सिंपल है, देखो, सपोज यहाँ पे करंट I1 पे से the potential difference was V1. For current I1, potential difference was V1. And suppose for current I2, let's say the potential difference was V2. तो अगर मैंने इन दोनों पॉइंट को I1 V1 और I2 V2 को लेके ट्राइंगल बनाया, तो if this angle is theta, this angle will also be theta. Corresponding. And you can see tan theta will be equal to what? Perpendicular by base. तो यहाँ पे perpendicular कितना है? Perpendicular is V2 minus V1 and base is I2 minus I1. So V2 will be what? R multiplied by I2. V1 will be R multiplied by I1. क्योंकि we are assuming कि R is constant. Ohm's law मतलब resistance must be constant. तो cancel out कर देंगे तो क्या बचेगा? R बचेगा. So when we plot V on the y-axis, current on the x-axis, slope of the line will be equal to R. समझ में आया? यानी अगर मैंने दो ग्राफ बनाया side by side on the same graph paper, suppose here if I have V versus I for two conductors, suppose A and B, so what we can infer from this graph? We can say that resistance of A will be more than resistance of B, क्योंकि A का स्लोप ज्यादा है, B का स्लोप कम है. Understood? Everything clear? अच्छा, अब देखो, अगर मैंने उल्टा कर दिया, if you just plot current on the y-axis and potential difference on the x-axis, अब क्या होगा बोलो? What will happen now? Now I am plotting V on the x-axis, current I on the y-axis, and again we expect कि अगर V equal to IR है तो I equal to V by R है.
Again R is constant, they are proportional, so we will get again a straight line. समझ में आ रहा है? Again we will get a straight line passing through the origin, but this time suppose if this angle is theta, तो slope of the line कितना होगा? Once again slope of the line will be equal to tan theta. अब यहाँ पे देखो, suppose current I1 पे, जो लास्ट मैंने एग्जांपल लिया था, suppose at the current I1 for it the potential difference was V1, and suppose for a potential difference of V2 the current was I2. तो अब की बार अगर मैंने एक ट्राइंगल कंप्लीट किया तो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? इट विल बी I2 माइनस I1, एंड बेस कितना हो जाएगा? V2 माइनस V1. तो अब की बार स्लोप कितना आएगा? Now the slope will be I2 minus I1 divided by V2 minus V1. But V2 is how much? R into I2. V1 is R into I1. So automatically we can say now this will be I2 minus I1 divided by R into I2 minus I1. तो cancel out होने से क्या बचेगा? We'll get 1 by, ठीक है? ये जो 1 by R मुझे मिला, the term which is called 1 by R, this is known as G, which is called conductance. What is it called? Conductance. ठीक है? तो V by I gives us resistance, I by V gives us conductance. ठीक है? Unit of conductance क्या होता है? This is measured in the unit ohm inverse, जिसको हम लोग MHO भी बोलते हैं. Ohm था OHM, reciprocal if it or opposite of it MHO, mo, or it is also called, it is symbolized by the symbol capital S, which stands for SIEMEN, Siemens, right? Named after a person. Okay, SEIMEN is the unit, symbol is capital S, unit of conductance. Clear? So that means if I tell you ki now I have drawn a graph where current is on the y-axis, potential difference is on the x-axis, and if I plot the graph like this, two conductors A and B, in this what will happen? Which one has more resistance? B has more resistance. Because in this graph we can see कि 1 by resistance of A will be more than 1 by resistance of B, क्योंकि slope 1 by R था. So automatically this means कि RB will be more than. Clear? समझ में आया? विशिष्टा बोलो, कोई कंफ्यूजन है? Remember the simple fact कि कभी भी अगर मुझे I versus V एक straight line मिलता है, right? And if the value of I depends uniquely on value of V, अगर तुमने V को नेगेटिव कर दिया तो I का खाली डायरेक्शन बदलेगा, बट वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा. Then we will call it as a ohmic conductor. पर अगर I versus V ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो it will be called a non-ohmic conductor. Is that clear? RA का वैल्यू सेकंड वाला ग्राफ में हमने I को, करंट को ऑन द y एक्सिस प्लॉट किया, तो इट विल बी 1 by R. ठीक है? यहाँ तक डन? Only some substitutes. Fine. अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग सा चीज देखो. तो here all the graphs were drawn for ohmic conductors. Now let us take an example. अगर मैं कंपेयर करूं कि suppose I am drawing I versus V और V versus I, जो भी ड्रॉ करो एक ही बात है. Suppose I am drawing I versus V for a conductor A, which is coming a straight line.
So I can say that conductor A is a ohmic conductor. Conductor A is a ohmic conductor क्योंकि I versus V graph straight line है और slope of IV graph constant. But if I plot it for a different case, suppose I plot it for the case of a semiconductor material called gallium arsenide, जो कि LEDs में use किया जाता है. ठीक है? There is a substance called gallium arsenide which is used in LEDs. तो ग्राफ ऐसा बनता है कि when we increase V, I will increase up to some extent linearly, then it will decrease like this. इस टाइप का ग्राफ बनता है. तो यहाँ पे एक चीज देखोगे कि when we are going from zero to a particular part, the graph is almost straight. जो almost straight part होगा, that will show us the ohmic region. अब इसको हम लोग ohmic conductor नहीं बोलेंगे, but we can say partly for some small values of V, it can show some similarity with Ohm's law. তাহলে ওখানে আমরা ওটা কি বলবো? Ohmic region বলবো. On the other hand, if you cross that part, you will find that with increase in V, I is decreasing. V increase করছে কিন্তু I decrease করছে. তার মানে কি? তার মানে in this particular part, the slope of I versus V will be negative. समझ में आया? In this particular part, di by dv will be negative because when V increases, I decreases. তাহলে এই রিজিয়নটাকে আমরা বলি নেগেটিভ রেজিস্ট্যান্স রিজিয়ন. তাই কি বলি? নেগেটিভ রেজিস্ট্যান্স রিজিয়ন. ঠিক আছে? তো when we find that with increase in voltage, current decreases or vice versa, then it is known as a negative resistance region. আর এই টাইপের ম্যাটেরিয়াল কি হবে? নন ওহমিক হবে. ঠিক আছে? যখনই graph I versus V will become whenever I versus V will become a non-linear curve, it will become a non-ohmic material or non-ohmic conductor. Fine. Is that clear? अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट था हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट? फैक्टर्स अफेक्टिंग resistance of a conductor. Factors affecting resistance of a conductor. Number one, it depends on what? It depends on length of the conductor. It depends on the length of the conductor. We know that R is proportional to L if area of cross section and temperature are kept same. यानी अगर मैंने सेम टेम्परेचर पे अगर मैंने सेम टेम्परेचर पे सेम मटेरियल का, मान लो कॉपर का एक लॉन्ग वायर लिया और सेम थिकनेस वाला एक शॉर्ट वायर लिया, तो शॉर्टर वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, लॉन्गर वायर का ज्यादा होगा. तो R is proportional to if A and temperature T are kept same, right? Same way it is found कि it also depends on area of cross section. It also depends on the area of cross section of the conductor. And it is found that R is inversely proportional to area of cross section if length and temperature are kept same. If you combine the factors, you can write that R is proportional to L by A, right? Or we can say that R is equal to a constant rho L by A. ये जो rho है, we can see कि rho will be equal to R if L equal to 1 unit and area of cross section also equal to 1 unit. And here rho is known as what? Resistivity of the material of the conductor. That means we can say that resistance also depends on, third factor क्या है? Material. Resistance also depends on material of the conductor, third factor. Right? And remember that it also depends on temperature.
It also depends on temperature. Because when we change the temperature, then the resistivity will change. अगर resistivity change करेगा तो resistance automatically change कर जाएगा. ठीक है? The resistance depends on shape and size of the conductor. It also depends on the material and it also depends on temperature. 4 factors on which it depends. समझ में आया? ठीक है? Now, remember the point that resistivity is measured in, its unit is ohm meter. SI unit of resistivity is ohm meter. Okay. On the other hand, reciprocal of resistivity, which is equal to sigma, this is known as what? Conductivity of the material of the conductor. Sigma is called conductivity of the material of the conductor, right? This is measured in the unit ohm inverse per meter, or we can say Siemens per meter, right? कंडक्टेंस क्या था? 1/r क्या था? सीमेन था. और 1/r 1/m हो जाएगा. अगर रेजिस्टिविटी है ओम मीटर, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? पर ओम पर मीटर. सो इट विल बी सीमेन पर मीटर. ठीक है? So how do we define resistivity? We can say resistivity of the material of a conductor is numerically equal to the resistance offered by a conductor of that material which has unit length and unit area of cross section. समझ में आया? अगर मैंने उस मटेरियल का एक ऐसा कंडक्टर बनाया जिसका लेंथ 1 यूनिट है, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर कुछ भी है, एंड इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज आल्सो 1 यूनिट, तो न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली, नंबर वाइज रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? सेम. ठीक है सर? The resistivity of the material of a conductor is what? Numerically equal to the resistance offered by a conductor of that material which has unit length and unit area of cross section. Clear? Clear? कोनो कंफ्यूजन? अब देखो, फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमने ऑलरेडी रेजिस्टिविटी का एंड कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकाला लास्ट डे. यस और नो? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर? What was the formula? So we saw that from free electron theory, we have already discussed that resistivity is given by the formula m by n e squared tau. ये formula था, where m represents mass of electron, n is the number density of free electrons, e is the fundamental charge of electron है that, and tau is the average relaxation time. Using this, we can explain the temperature variation of resistivity. What we can explain? Temperature variation of resistivity. Temperature अगर change करेंगे तो resistivity of the material of a conductor कैसे vary करेगा? How will it vary? We can explain that with the help of free electron theory. Right? So let's come to the first case. For metals, what is found? Key with increase in temperature,
the relaxation time tau decreases, right, on account of an increase in the frequency of collisions. तो देखो बेसिकली सिंपल फैक्ट है कि रेजिस्टेंस क्यों होता है, व्हाई रेजिस्टेंस ऑकर्स इन अ कंडक्टर, क्योंकि हमारा मॉडल क्या था कि इलेक्ट्रॉन लोग रैंडमली मूव कर रहा था, वी हैव अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस, दे हैव स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग अगेंस्ट द फील्ड, बट क्या वो लोग यूनिफॉर्मली ड्रिफ्ट कर सकता है, नहीं करता है। जनरली व्हाट हैपेंस कि they pick up the energy from the electric field, they start accelerating, but soon they collide with the vibrating ion, वो लोग अपनी एनर्जी लूज करता है, फिर से पिकअप करता है, फिर से रन करता है, फिर कोलाइड करता है, सो दे कीप ऑन मूविंग लाइक दिस, ठीक है। तो एक्चुअली देयर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, so these collisions, right, they account for the presence of resistance. So due to the collision suffered by the free electron with the vibrating ions, there is resistance in the conductor. अब जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रैंडम थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में जो आयंस का वाइब्रेशन है वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर आयंस का वाइब्रेशन ज्यादा हुआ, सपोज ये बेंचेस वेर लाइक आयंस एंड सम पीपल आर मूविंग, अ क्राउड इज मूविंग रैंडमली थ्रू दिस स्पेस, अगर ये लोग वाइब्रेट करने लगेगा तो व्हाइल मूवमेंट दे विल सफर मोर कोलिजन, चांस ऑफ कोलिजन ज्यादा हो जाएगा। अगर चांस ऑफ कोलिजन ज्यादा हो जाएगा तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। Okay, so with increase in temperature, tau decreases on account of an increase in the frequency of collisions. But the number density N remains more or less the same. This causes resistivity to increase with an increase in temperature. तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एनटा डिपेंड करे नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डिपेंड करे नेचर ऑफ द मटेरियल। वन सेकेंड, तो मेटल्स এর জন্য n যে আছে, ঠিক আছে, ইন কেস অফ মেটালস n does not depend much on temperature. এটার অ্যাকচুয়াল যদি রিজন দেখতে হয় তাহলে আমরা ফ্রি ইলেকট্রন থিওরিতে খুব একটা ভালো বুঝতে পারবো না, আমাদেরকে বুঝতে হবে ফ্রম দ্য ব্যান্ড থিওরি অফ সলিড, যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি লাস্ট চ্যাপ্টারে পড়বো, সেমিকন্ডাক্টর চ্যাপ্টারে। তো অ্যাকর্ডিং টু ব্যান্ড থিওরি কি হয় কি, এই যে ইলেকট্রন গুলো when they were in something called valence band, they were in a bound state, and when they reach the conduction band they become free. মেটালস এ কি হয়, এই যে দুটো ব্যান্ড আছে, the valence band and the conduction band, they almost overlap, right, or the gap between them is very small. And if you increase the temperature, the change in that gap, okay, the change in that gap will not be very large. So that is why the number density of electrons almost remains same. collision বেড়ে যাচ্ছে বলে ইলেকট্রনটার আগে যা কোলিশন হচ্ছিল আয়নসদের সাথে এখন বেশি হবে। তো যদি কোলিশন বেড়ে যায় তাহলে বিটুইন টু কোলিশনস তো টাইমটা কম পাবে। ধর আগে একটা ইলেকট্রন 1 সেকেন্ডে 10 টাইমস কোলাইড করবে, ঠিক আছে, এখন 1 সেকেন্ডে ও 15 টাইমস কোলাইড করবে। তাহলে আগে বিটুইন টু কোলিশনস টাইম वाज 1/10 সেকেন্ড, নাও বিটুইন টু কোলিশনস টাইম ইজ 1/15 সেকেন্ড, কমে গেল না? তো উইথ মোর ইন ফ্রিকোয়েন্সি অফ কোলিশন রিল্যাক্সেশন টাইম উইল ডিক্রিজ, বুঝা গেল? So that is why what is found ki when we increase the temperature, if you plot a graph, suppose if you plot a graph temperature on the x-axis and resistivity on the y-axis, তাহলে কি দেখবো যে for metals the resistivity will increase with temperature non-linearly, actually linearly increase করে না, মানে এটা কার্ভ হবে কিন্তু খুব, it will not be a very sharp curve, right, it will be a curve, but it like generally in case of metals like copper, right, the you can say slope of the graph, we will discuss, the slope of the graph बहुत ज्यादा नहीं होता है,
Right? Its order is very less. Say 10 to the power -4 per degree Celsius, yeah, -5 per degree Celsius. बहुत small होता है. So that is why the graph will not be a very steep curve. It will be a curve, but it will be nearly straight line. For a much large range of temperature, it will appear as a straight line. Okay, so this will be the graph for metals. Say, let's take, say, example, copper. Copper is a metal. Okay. Now, in case of alloys, what is found? Alloy में क्या होता है बोलो? Alloys में we have a mixture of metals with other metals or in presence of some non-metals also. तो alloy में क्या होता है कि जब तुम alloying करोगे, when we do alloying of different metals या metals added with some non-metals, तो जो मान लो कि मैंने आयरन मेटल के साथ कुछ दूसरा मेटल ऐड किया, तो द होस्ट मटेरियल वाज आयरन. तो आयरन का एक लैटिस स्ट्रक्चर है, उसमें आयंस लोग वाइब्रेट कर रहा है बैठ के, और जो बीच में स्पेस था वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स लोग घूम रहा था. अब क्या होगा, जो इम्प्यूरिटी आयंस है, इम्प्यूरिटी एटम्स है, दे विल आल्सो ऑक्यूपाई सम पोजीशंस इन दोस गैप्स. तो अब गैप्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. गैप्स कम हो जाएगा तो कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा. तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, द रेजिस्टिविटी विल बी मोर. तो alloys have higher resistivity as compared to normal metals. Alloys का resistivity is higher. Normal metals का देखोगे तो copper का resistivity is in the order of 10 to the power -8 ohm meter. But nichrome नाम सुना है? Nichrome, a common alloy which is used in standard resistors, in heating coils of iron, right? All this. तो nichrome का resistivity कितना होता है? 10 to the power -6 ohm meter होता है, 100 times more होता है. ठीक है. तो alloys में क्या होता है? The impurity ions, they occupy some of the lattice vacancies or gaps, and that is why the electrons suffer more collisions, their free path decreases, and that is why the resistivity is higher. ठीक है. Kintu with increase in temperature, right, the change in the frequency of collision is not very high. Right, it is comparatively lesser than case of alloys. That is why what happens, if you plot the same kind of graph for an alloy, if you plot the same kind of graph for an alloy, the overall theory will remain same. कि temperature बढ़ले, collision time decrease करबे, tau will decrease, resistivity will increase, but the increase will not be very sharp. The increase will be rather slower, and we will find that the graph will be almost a straight line, almost a flat straight line. A straight line having a very less slope. This is the case in case of alloys, like nichrome. समझ में आया क्या बोला? रीजन क्लियर हुआ? तो alloys के लिए resistivity का values are higher, but their temperature variation of resistivity is slightly or much lesser as compared to normal metals. बुझा गलो? एक ग्राफ गुलो प्रैक्टिस करते हो, राइट? एक बुक में भी मिल जाएगा ग्राफ, ये वाला दिया हुआ है, and these graphs are important for exam also. Now come to semiconductors. In case of semiconductors, what happens? For semiconductors, यहाँ पे हाइफन लगाया जस्ट याद रखने के लिए, एक्चुअली इट इज टुगेदर. तो फॉर सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, example is silicon or germanium. ठीक है. तो for semiconductors what is found कि with increase in temperature, the frequency of collisions increases, due to which tau decreases, but the number density of free charge carriers, like free electrons, N, increases, and this increase dominates over the decrease in tau. The decrease in tau. Mane tau is decreasing, that is fine.
like metals, but N increases and its increase is much larger as compared to the decrease in relaxation time. Consequently, the factor N tau increase in temperature causing resistivity to decrease. बुझा गया ताले metals के लिए या alloys के लिए the number density n was not changing much with temperature, but semiconductors के लिए n का change बहुत ज्यादा, w tau का change क्या होगा, कम होगा, and as a result the product n tau will increase. अब देखो फॉर्मूला में क्या था, m by n squared tau, तो अगर n tau increase होगा तो resistivity decrease होगा, and as a result when we plot a graph we get the graph like, say this is resistivity versus temperature, so it decreases like this, right? It shows a decreasing trend. ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि starting from the expression for resistivity obtained from free electron theory, explain how resistivity of metals and semiconductors will vary with temperature. और ये प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में भी इसका रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है. हाँ ठीक है, एक्सपेरिमेंट इसका है प्रैक्टिकल में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है, ठीक है, रेजिस्टिविटी निकालने का यूजिंग वीआई ग्राफ, तो वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन थ्योरी में वाइवा में पूछ सकते हैं, राइट? ठीक है सर. अब मान लो क्वेश्चन में तुमको ऐसा पूछ दिया, जो ये वाला क्वेश्चन आया भी है प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में, नॉट दिस ईयर बट अ फ्यू इयर्स बैक, ये पूछा गया था कि ड्रॉ द टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर कॉपर एंड सिलिकॉन. तो कॉपर का ग्राफ कौन सा बनेगा, फर्स्ट वाला क्योंकि मेटल है, और सिलिकॉन का कौन सा बनेगा, लास्ट वाला, बिकॉज इट इज अ सेमीकंडक्टर. समझ में आया? तो वी हैव टू नो कि व्हिच काइंड ऑफ मटेरियल आर वी टॉकिंग. नाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस मेटल्स और वेरियस type of conductors, we define a term called temperature coefficient of resistivity. We define a term called temperature coefficient of resistivity. What is temperature coefficient of resistivity? This is defined as, we use the symbol alpha to represent it. It is defined as the fractional change in resistivity, defined as fractional change in resistivity per unit rise in temperature, per unit rise in temperature, right? Remember कि इसका जो unit होगा, it will be per degree Celsius or per Kelvin. ठीक है से, समझ में आया? तो what we can say? We can say that for metals and alloys, alpha would be positive, but remember alpha for alloys is much lesser as compared to alpha for normal metals. That is why alloys like nichrome, constantan and manganese, they are used to make standard resistor. अगर लैब में तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किया होगा तो देखा होगा, जो रियोस्टेट के ऊपर कॉइलिंग होता है या रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर जो वायर होता है, इट इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटाइन या मैंगनीज या नाइक्रोम, कॉपर का नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है वो बहुत ही स्मॉल है. तो इससे क्या होगा, फॉर लार्ज टेम्परेचर वेरिएशंस आल्सो द रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज बाय मच. तो जो मैंने 1 ओम लिख के कैलिब्रेट किया था, वो अगर मैंने कैलिब्रेट किया था 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे वो 1 ओम ही रहेगा, वो रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज नहीं होगा. मे बी इट विल चेंज बाय वेरी स्मॉल मार्जिन, राइट? बट अगर वो मैं प्योर मेटल का भरता तो चेंज ज्यादा होता, एंड द एरर इन द एक्सपेरिमेंट वुड बी मच लार्जर. Is that clear? So why constantan or manganese are used to make standard resistors? Number one, because they have high resistivity. तो high resistivity होगा तो क्या होगा? To make larger resistance, we need small length of the wire. Yes or no? R equal to rho L by A था. अगर मैंने A को फिक्स कर दिया तो रो जितना ज्यादा होगा, लार्ज R के लिए L क्या लगेगा, कम लगेगा.
तो वी कैन मेक लार्जर रेजिस्टेंसेस बाय यूजिंग स्मॉल लेंथ ऑफ कॉइल. बहुत बड़ा मेरे को कॉइल बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा. मटेरियल विल बी सेफ. एंड नंबर 2 इज व्हाट, the temperature coefficient of resistivity is very small, so that the temperature remains constant over a fairly large range of temperature. ठीक है. This is one part. On the other hand, we can say that for semiconductors हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टिविटी घटता है. So d rho by dt will be negative. So we can say that alpha will be negative. Temperature coefficient of semiconductors will be negative. Clear? यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? बोलो. কোনটা? টেম্পারেচার কোএফিসিয়েন্ট অফ রেজিস্টিভিটি মানে হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল চেঞ্জ ইন রেজিস্টিভিটি পার ইউনিট রাইজ ইন টেম্পারেচার. তার মানে ধর আমি তোকে বললাম যে at temperature T resistivity was rho, at temperature T plus dt resistivity was rho plus d rho. তাহলে আলফা কত হবে? d rho by rho d, change in resistivity by original resistivity divided by increase in temperature. এবার মেটালস আর সেমিকন্ডাক্টরস কি হয়? মেটালস আর অ্যালয়েজে কি হয়? টেম্পারেচার বাড়লে রেজিস্টিভিটি বাড়ে, তাহলে আলফা পজিটিভ হবে, বিকজ d rho by dt is positive. dt বাড়লে d alpha বাড়ছে, মানে পজিটিভ হচ্ছে বিকজ. আর সেমিকন্ডাক্টরে কি হবে? if dt is positive, d rho, if dt is negative, d rho will be positive. উল্টো হবে, ratio alpha will be negative. So we can say for semiconductors temperature coefficient of resistivity is negative. ঠিক আছে? यहाँ तक क्लियर? समझ में आया? तो रिमेंबर अल्फा का वैल्यू इज नॉट अ स्ट्रिक्ट कांस्टेंट. इट इज अ कांस्टेंट फॉर द मटेरियल, बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर रेंज. अलग अलग टेम्परेचर रेंज पे अल्फा का वैल्यू अलग अलग भी हो सकता है. दैट इज वाई जो हमने ग्राफ बनाया था वो परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं था. इट वाज हैविंग अ स्लाइट कर्वेचर. ठीक है सर? यहाँ तक क्लियर है? तो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट. So this was, all these discussions were based on the free electron theory of metals, जो हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की हेल्प से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंटली हमने देखा और उसको हम लोग थ्योरेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. तो नाउ इट वाज रियलाइज्ड, इट वाज फाउंड, ठीक है सर, इट वाज फाउंड दैट some deviations were observed. It was found that for certain materials below a certain temperature called Tc, the resistivity was found to be zero. Below a certain temperature, resistivity was found to be zero, and above the temperature, resistivity is showing normal trend, like metals. इस टाइप का जो metals, इस टाइप का ग्राफ जो बनेगा, जिसके लिए बनेगा, this will be in case of materials called superconductors. Right? So it was found that in certain materials below a certain temperature, the normal conductivity shifts to a new version, a new state called superconductivity. जहां पे resistivity कितना होता है? Zero होता है. That the material offers no resistance. There are no resistivity. So above the temperature Tc, it behaves as normal metal, normal conductor. Below Tc, it behaves as superconductor. It is like a phase change. जैसे होता है ना कि melting point के ऊपर liquid water, उसके नीचे ice. It is like that. Phase change हो रहा है. Above Tc, it is a normal conductor. Below Tc, it is a superconductor. So this phenomenon is known as superconductivity. ठीक है सर? কিছু কিছু materials से what is found कि when we vary the temperature, resistivity varies, but below a certain temperature, resistivity becomes zero. এই টাইপের কন্ডাক্টিং আমরা কি বলি? সুপারকন্ডাক্টিভিটি বলি. Superconductivity was first observed, right? This was first observed in mercury at 4.2 Kelvin. 4.2 Kelvin মানে বুঝতে পারছিস? কত সেলসিয়াস? minus 269 degrees Celsius. Understood? So first at 4.2 Kelvin for mercury, it was first discovered, and it was discovered by a person called H. A.
Yes, sir. H.K. Owens, H. Kamerlingh Owens, he was the first to observe that mercury, when cooled below 4.2 Kelvin, shows something like superconductivity. Achha, superconductors are also perfectly diamagnetic. Now, what is perfect diamagnetism? এটা এখনো আমরা বুঝবো না. We will learn this in chapter number 5. তখন আমি বুঝাবো কি perfect diamagnetism মানে কি হয়, and superconductors are perfectly diamagnetic also. এটা একটা property, এটা we will see later. ঠিক আছে? এই যে TC যে টেম্পারেচারটা, this is known as the superconducting transition temperature. Yes, sir. Or something called as the critical temperature, right? So superconducting transition temperature or critical temperature, below this it will behave like a superconductor, above this it will behave like a normal conductor, normal metal. Yeah? Is that clear? है? का नाम सुना मार्टिन कूपर? Who was Martin Cooper? हाँ, जिसके बिना प्रियांश का लाइफ अधूरा था. Inventor of cell phones, right? So Martin Cooper, right? He got 2 Nobel Prizes. He shares a Nobel Prize on the explanation of this superconductivity with 2 other people, right? Bardeen and Shearer, and they developed something called BCS theory. That explain why superconductivity occurs. We cannot explain that by free electron theory. Remember, in the superconducting realm, free electron theory fails. ঠিক আছে, সেটা অন্য থিওরি এক্সপ্লেন করতে. এনিওয়ে, দিস ওয়াজ আন্ডারস্টুড, ক্লিয়ার হলো? আচ্ছা, এইবার যেটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট পার্ট, দিস মাচ ইজ ফাইন. জিনিসটা समझ में आ रहा है? Now let us talk about 2 important terms, and here we will talk about something called color coding of resistors. Color coding of resistors. Acha. Now, what do we mean by a resistor and what do we mean by resistance? See, resistance is a property of conductor to oppose the flow of charge, but to oppose current. Every conductor has some resistance. Right? Though every conductor, every material has some resistance. Now, any such conductor which has a specific value of resistance which can be applied in a circuit is called a resistor. তাহলে resistor কি? এমন একটা wire, a piece of wire, such a conductor which has a definite value of known value of resistance. तो जिसके यूज से हमें रेजिस्टेंस मिलेगा सर्किट में, उसका नाम क्या है? रेजिस्टर है. इट इज अ सर्किट एलिमेंट. चलो, so now when we use resistors, there are 2 forms of resistors which are very common. একটা হচ্ছে বলে wire bound resistor, যেখানে we use coil of wires, যেরকম ওই resistance box এর ভিতরে থাকে, and the other one is called known as carbon resistance. If you open any electronic circuit, যেরকম ফোন, সবকিছু খুলে ফেলাস না, ওটা হলো ভেঙে দেবে. ঠিক আছে, বললো স্যার বলছে খুলে দেখতে পারিস. Okay, so if you have suppose কোনো old calculator বা any non-working TV set, कोई भी electronic circuit को अगर open करोगे, देखोगे inside that we have this kind of a object. কেমন দেখতে হয় জিনিসটা? এরকম দেখতে হয়, অনেকটা এরকম একটা cylindrical body থাকে. ঠিক আছে, this kind of an object you can see in almost all electronic circuits. A cylindrical or ceramic kind of body like this having 2 wires at 2 ends. ঠিক আছে, এরকম ছোট্ট একটা জিনিস দেখতে কালার্ড থাকে কিছু কিছু. So this kind of thing is called a carbon resistor. Okay, तो carbon resistors का यूज क्या है? They are used to apply particular resistance in circuits, electronic circuits, electrical circuits, but they are very small in size. They are very cheap also, very cost effective. ঠিক আছে, যদি একটা ওই 50 পিসেস বা 100 পিসের একটা কার্বন রেজিস্টার প্যাকেট কিনিস, তার দাম 50 রুপিস, মানে একটার দাম 50 পয়সা. মানে এখনো আজকেও 50 পয়সা কিছু পাওয়া যায়. ঠিক আছে, अभी भी कुछ मिलता है, कार्बन रेजिस्टर एटलीस्ट मिलता है. तो कार्बन रेजिस्टर्स आर वेरी small in size and they are very cheap also, and that is why they are widely used in electronic circuits. तो now कार्बन रेजिस्टर इतना छोटा होता है कि वहां पे वैल्यूज लिखने से, या उसको लिखना भी डिफिकल्ट है, उसको रीड करना भी बहुत डिफिकल्ट है.
That is why we use something called color coding. Instead of writing the values, they are color coded. Now the color coding is done by 4 colored rings inscribed on the ceramic body of the resistor. Eta body ta kisha thake ceramic er thake. Right? The body is made of ceramic having metal contacts, and on the body some colored rings are drawn. Printed. So like suppose for example I'm bollam je amar first ring ta ache red color er. Right? Suppose I have the first colored ring red in color, and suppose the second one is black. Black to emni black ho jabe ekhane. Jai hock. Suppose let me make it green. This kind of rings you will find, right? Blue, green, third one, suppose blue nila. Okay, and in addition to these 3 rings, there is one more ring which comes in only 3 varieties. First, we are drawing a variety which is golden in color. So whenever you see a carbon resistor, this kind of a shape you will obtain. Aisa shape दिखेगा हम लोग कि 3 or 4 colored bands will be there. अब ये जो 4th color band है, the 4th band occurs in only 4 colors. It can either be golden, or it will be in silver color, or it will have no color. ঠিক আছে? এই যে last band টা আছে, band number 4, it will come in only 3 colors, gold, silver or no color. বুঝা গেল? Always when we read a carbon resistor, we'll read it keeping the last band number 4. মানে gold, silver বা no color যে band টা আছে ওটাকে আমরা 4th এ রাখবো। রেখে the previous 3 will be marked 1, 2 and 3. এই যে first যে band টা, this gives us the first significant digit. This gives us the first significant digit in the value of the resistance. In the value of the resistance. ঠিক আছে? Second ring gives us the second significant digit in the value of the resistance. The third band gives us decimal multiplier. Decimal multiplier মানে কি? That যখন আমরা যে কোনো number के scientific form में लिखी, whenever we write any number in scientific form, like 200 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 2 into 10 to the power 2. तो 10 to the power उसको क्या हम लोग बोलते हैं? Decimal multiplier बोलते हैं ना? So the third band will give us the decimal multiplier, and the 4th band is known as the tolerance band. It gives us the tolerance limit. Tolerance limit माने कि it means the allowed percentage error, which is the allowed percentage error in the value of the resistance. बुझा गया? Now कैसे रीड करना है? किसका कितना वैल्यू है? For that, we have a chart of colors. As I said, it is color coded. So there is a chart of colors. The chart of colors starts from the darkest color to the lightest color. So darkest कौन सा होता है? Darkest. Normally लोग पेंटिंग करते हैं, डार्क क्या होता है? Black. ठीक है? और lightest कौन सा होता है? ठीक है? तो it is having one color each for a digit of the decimal number system. Decimal number system error, percentage error है ना जे कोनो वैल्यू पे, ठीक है? तो हम लोग कोई भी नंबर किसमें लिखते हैं? डेसिमल सिस्टम में लिखते हैं ना? डेसिमल नंबर सिस्टम में 1 2 3 4 like की नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में व्हाट डिजिट है? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन अ डेसिमल नंबर सिस्टम? कितना डिजिट्स होता है? How many digits do we have when we write numbers? How many digits are there?
10 digits, 0 से लगे 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, when we combine them, we get all the numbers. So for each such digit, we have a color. ठीक है? Remember, first we have black, which corresponds to the value 0. The second one is brown, which corresponds to the color code 1. Next, we have red, which corresponds to 2. Next, we have orange, which corresponds to 3. Next, we have yellow, which corresponds to 4. Next, we have green, which corresponds to 5. Next, we have blue, corresponds to 6. Next, we have violet, corresponds to 7. Next, we have gray, corresponds to 8. And lastly, we have white, which corresponds to 9. যদি কনফিউশন হয় কি স্যার প্রথম জিটা গ্রিন না প্রথম জিটা গ্রে কিভাবে বুঝবো যে বললাম ডার্কেস্ট টু লাইটেস্ট তো গ্রিন ইজ ডার্কার দেন গ্রে তাহলে গ্রিনটা লেস ভ্যালু হবে গ্রেটা হায়ার ভ্যালু ঠিক আছে বুঝা গেল তো ইফ ইউ সি দ্য ফার্স্ট লেটার্স মানে বি তারপরে বি তারপরে আর তারপরে ও আই জি বি বি G and W এটাকে মনে রাখার জন্য we can remember a sequence ঠিক আছে it is read as BB Roy BB Roy ভদ্রলোক একজন Great Britain lives in Great Britain ঠিক আছে very good wife মানে has very good wife বুঝা গেল তোদের জন্য পুরোটা অ্যাপ্লিকেবল না আমার জন্য বেশি অ্যাপ্লিকেবল যাই হোক তো BB Roy GB Great Britain very good wife this is how we remember the sequence first B starts with black and the last W is white এই যে gold color will give you percentage error of 5%. Black zero. Zero থেকে start হয়. Decimal number system, digits start with 0. Silver stands for 10% error and no color stands for 20% of error. ঠিক আছে যদি গোল্ডেন হয় টলারেন্স ব্যাট যদি গোল্ডেন কালারের হয় তার মানে এরর কত আছে 5% সিলভার হলে 10% আর কোনো কালার না থাকলে 20% ঠিক আছে समझ में आया তার মানে এই যে আমি রেজিস্টারটা ড্র করেছি এর ভ্যালু কত আছে what is the value of this resistance in the diagram কিভাবে লিখবো তাহলে here we can say this resistance okay the resistance shown in the diagram is the resistance of the resistor shown above is R equal to first color টা কি আছে first color was red তাহলে red এর ভ্যালু কত 2 কি লিখবো 2 সেকেন্ড টার কি আছে গ্রিন গ্রিন এর কালার কত 5 তাহলে লিখবো 2 5 into 10 to the power what is the color code for blue 6 right plus minus what is the color for gold 5% so we can say that the resistance of this resistor is 25 into 10 to the power 6 ohm plus minus 5%. मतलब ये रेजिस्टर कितने का है 25 मेगा ओम का है मेगा मतलब मिलियन ओम 10 to the power 6 ओम फर्स्ट वाला जो कलर है इट इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट फर्स्ट कलर कौन सा है रेड रेड का कोड कितना है सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट इज ग्रीन ग्रीन का कोड इज 5 into 10 to the power third digit कौन सा है ब्लू ब्लू का कोड इज 6 এটা হলো ভ্যালুটা প্লাস মাইনাস এরর कितना है तो एरर इज गोल्ड मतलब 5% 5%
এরর, মানে এই যে আমি 25 × 10⁶ ওহম লিখেছি, এর 5% হবে এরর ইন দ্য মেজারমেন্ট অফ দ্য রেজিস্টার। হ্যাঁ, ফিক্সড ভ্যালু, এটাই কোডটা, মানে এই সবগুলো কোডের ফিক্সড ভ্যালু আছে। ক্লিয়ার? क्लियर है यहाँ तक? Plus minus, we don't write positive negative, these are error limits. Whenever we express any number, like suppose class 11 में था ना कि when suppose you are measuring the length of any wire, diameter of a wire, so what we write कि diameter of the wire is this much millimeter plus minus this much %. Error limits कि यहाँ से यहाँ तक minimum to maximum. हो गया? Clear? এর তো কোনো কনফিউশন করো? क्या বুঝতে পারছিস? क्या বুঝতে পারছিস? গল্প করে যাচ্ছে। একসাথে প্রথমে ফার্স্ট ডিজিট, তারপরে সেকেন্ড ডিজিট, তারপরে 10 টু দি পাওয়ার কত, আর লাস্টে তো এরর পাবে। ওটা তো তিনটেই কালার আছে, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওই না, যে কোনো মেটালিক ওয়্যার রেজিস্টার হতে পারে, কিন্তু এটা কার্বন রেজিস্টার হবে না, এটা কার্বন রেজিস্টার কথা বলছি। ঠিক আছে? ডান। So now we will just recapitulate the next point. Recapitulate কেন বলছি, because this you have learned in class 10th also, and that is about combination of resistors. মনে আছে? So let us come to combination of resistors. अब देखो, combination of resistors actually in your syllabus it is not mentioned. Syllabus में mentioned नहीं है, but important है. क्यों important है कि when you solve different questions, there you have to take help of combination of resistors. कोई भी practical question में या जब practicals करोगे वहां पे भी इसका use हम लोग को होगा. That is why we will discuss about it, right? But obviously derivations type का question इसमें नहीं आएगा. We have to use the thing in applied form. माने numerical আসते पारे किंतु derivation আসते in this form, right? तो रिमेंबर कि कोई भी सर्किट कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कोई भी कॉम्बिनेशन दो ही टाइप का होता है, वन इज कॉल्ड सीरीज, वन इज कॉल्ड पैरेलल. ठीक है? তাহলে combination of resistors can also be of two types in general. One is called series combination, the other one is called parallel combination. বলো এবার সিরিজ মানে কি? যেমন স্পাইডারম্যান সিরিজ মানে কি, যেখানে একটা মুভি শেষ হলো ওখান থেকে একটা মুভি স্টার্ট হয়, তাই তো? इंडियन मूवी नाम सीरीज बोलिस ना, दादा যেখান থেকে ইচ্ছা শুরু হতে পারে। এনিওয়ে, তো সিরিজ मतलब क्या, एंड टू एंड the resistors are connected end to end. This is the symbol of a resistor, right? Symbol of resistor you know, zigzag. ঠিক আছে? তো suppose we have three resistors in series, one is R1, the second one is R2, third one is R3. তাহলে if they have end to end connection, বা if two resistors have only one point in common, সেটাকে আমরা কি বলবো, সিরিজ কম্বিনেশন। समझ में आया? On the other hand, if both the ends are connected together, if both the ends are connected together like this, then we will say that they are in parallel. Then parallel means all of them have common endpoints like A and B, and series means between two resistors only one end is common. ঠিক আছে? Now, suppose if I connect this combination to one battery or cell so that the potential difference across the combination is V. তার মানে আমি কি বলতে পারি যে VA minus VB will be equal to V. Potential of A minus potential of B is equal to V. বলতে পারি। ঠিক আছে? Now all the three resistors एक ही पाथ में बिलोंग करता है। मतलब क्या, अगर यहां से करंट एंटर करेगा सर्किट में, करंट के पास एक ही पाथ है फ्लो करने के लिए, there is no alternate path to flow. So what will happen? All the three resistors will have the same current. That means in series what happens? Current through each resistor is same.
Is that clear? Fine. On the other hand, if I connect this combination to a battery or cell, and if I say that the potential difference across the combination is V, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, हर point A, every first point is at higher potential, every second point is at lower potential, तो उनका potential difference क्या हो जाएगा, same हो जाएगा. तो parallel means potential difference across each resistor is same. यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में current through one resistor will not depend upon its resistance. It will depend upon all of them which are in series. কি বললাম বুঝা গেল? সিরিজ কম্বিনেশনে কারেন্ট থ্রু একটা রেজিস্ট্যান্স ডিপেন্ড করবে ওর উপরে শুধু না, ইট উইল ডিপেন্ড আপন অল অফ দেম হুইচ আর ইন সিরিজ. তার মানে যদি আমি ফ্যানটাকে অফ করি আর ফ্যান আর লাইট, সাপোজ লাইটটা যদি সিরিজে থাকে তাহলে দুটোই অফ হয়ে যাবে. ইফ কারেন্ট থ্রু ওয়ান ইজ জিরো, দ্য আদার ওয়ান উইল অলসো বি অটোমেটিক্যালি জিরো. বুঝা গেল? তাহলে সিরিজ কম্বিনেশনে কি হবে, অল অফ দেম উইল হ্যাভ দ্য সেম কারেন্ট. So current through any one will depend upon not only itself but all other resistors present. On the other hand, potential difference in case of parallel combination will be same. তার মানে কি, potential difference across each resistor will not depend upon itself, but it will be same for all those which are in parallel. Like here, all the combinations are in parallel. So potential difference across the fan, across the light, across that fan, everything is equal. ठीक है? But यहाँ पे क्या होगा, current will divide. यहाँ पे क्या होगा, potential difference will divide. So suppose if I say that potential difference across AC is V1, across CD is V2, and across DB is V3, then what will happen? V1 plus V2 plus V3 must be equal to V. On the other hand, अगर यहाँ पे parallel में total current supplied by the battery is I, it will divide into three parts: I1 through R1, I2 through R2, I3 through R3. And we can say that total current I must be equal to I1 plus I2 plus. Yes or no? These are the basic rules of series and parallel combination. Now, V1 कितना होता है, I into R1. V2 कितना होता है, I into R2. V3 कितना होता है, I into R3. I तो सबके लिए सेम है. तो अल्टीमेटली क्या होगा, if you add R1 plus R2 plus R3, that will be equal to V by I, and it will be equal to the equivalent resistance. It will be equal to the equivalent resistance. माने अगर मैं सबको हटा के एक रेजिस्टेंस लगाऊं तो वो कितना होना चाहिए, R1 plus R2 plus R3 होना चाहिए, to keep the current same. ঠিক আছে? তাহলে আমরা কি লিখতে পারি কি, for n identical resistors of resistance small r each in series, equivalent resistance कितना हो जाएगा, n times of r. यहाँ पे क्या होगा, you know I1 will be V by R1, I2 will be V by R2, I3 will be V by R3. सबका V तो सेम है, तो simply we can say कि I by V will be 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. And I by V क्या है, reciprocal of the equivalent resistance है, क्योंकि V by I R होता है. So we can say that 1 by R equivalent will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. কিন্তু এটাকে এভাবে মনে রাখবি না, কারণ এক্সামে কি করবি, রেসিপ্রোকালটা নিবি না, আবার গড়বড় হয়ে যাবে आंसर, যেটা হয়. ঠিক আছে? তো instead of that we will write it as R equivalent equals to reciprocal of 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ঠিক আছে? So we can say that for n identical resistors in parallel, equal resistance कितना हो जाएगा, reciprocal of 1 by R plus 1 by R plus 1 by R n times. So this will become R divided by n.
Yani in series overall resistance will increase, in parallel overall resistance will decrease. For more than two resistors, maximum resistance कब होगा? When all are in series. Minimum कब होगा? When all are in parallel. Right? V1 হবে I into R1, V2 হবে I into R2, V3 হবে I into R3, I कॉमन नहीं है. बोलो. अब अगर तुमको इंडिविजुअल निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड V1 अलोन, कितना होगा? I into R1, बट I कितना था? I was V by total R. Yes or no? So this will become V R1 by R1 plus R2 plus R3. Same way, V2 will become V R2 by R1 plus R2 plus R3 and so on. Direct bar করা যাবে. যদি total V জানি, if you know total V, you can find out V across each resistor direct. Yani we can say in general, VI will be V into RI by summation of RI from I equal to 1 to N. Clear? Same way, if you want to find division of current in parallel combination, I1 कितना होगा? V by R1. ठीक है? किंतु V की छिलो I into total R. We can say this will be I by R1 divided by total R की छिलो reciprocal of 1 by R1 plus 1 by R2. Right? Same way, I2 will be I by R2 divided by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R2. তার মানে সিরিজে কি হবে? পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স যেটা সবচেয়ে বেশি রেজিস্ট্যান্স তার অ্যাক্রসে ম্যাক্সিমাম হবে, আর প্যারালালে কি হবে? কারেন্ট অ্যাক্রস দ্য মিনিমাম রেজিস্ট্যান্স উইল বি ম্যাক্সিমাম, ম্যাক্সিমাম রেজিস্ট্যান্স উইল বি समझ में आया? मिस्टर कैलकुलेटर में क्या खोज रहे हो? कैलकुलेटर में क्या नोट कर रहे हो? क्लियर? So in parallel, we can say current through the ith resistor will be total current by Ri divided by summation of 1 by Ri. क्लियर है? तो ये I1 কত ছিল? I by R1 by reciprocal এর sum. I2 ছিল I by R2 by reciprocal এর sum. তাহলে ith মানে জেনারেল একটা কি হবে? I by Ri by summation of the reciprocal. समझ? यहाँ तो क्लियर? तो যখনই আমরা combination of resistors এর question solve করব, these are the points that we have to remember. यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो बोलो. प्रियांश, बुझতে পারছিস? উৎসব, sure. Which can be carbon resistor? No. Any confusion to this? R equivalent B equal to I into R है तो আমি যদি পুরোটাকে রিপ্লেস করে একটা রেজিস্ট্যান্স লাগিয়ে দিই, যা রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে R ইকুইভ্যালেন্ট, তাহলে ও কারেন্টটা সেমই থাকবে, আর তাহলে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটাও V থাকবে. তাহলে V এর জায়গায় I into R ইকুইভ্যালেন্ট লিখতে পারি, সেটাই লিখলাম. আবার R ইকুইভ্যালেন্ট কি ছিল? রেসিপ্রোকাল অফ 1 বাই R1 প্লাস 1 বাই R2 প্লাস 1 বাই R3 ছিল, ওটাকে পুট করে দিলাম. ক্লিয়ার? তাহলে এই অবধি রিভাইজ করে আসবি সবাই নেক্সট ডে, রাইট? তো নেক্সট ডে we will see one or two problems on this, then we will go for the next part. ठीक है?